जब आप सदियों पुराने किले या खंडर का दौरा करते हैं, क्या आप सिर्फ उन अवशेषों को देखते हैं या आप जगह के इतिहास से जुड़ना पसंद करते हैं? Forts and temples last for centuries, surviving wars and floods, whereas the present day buildings are so vulnerable. Welcome, my name is Sukhpreet Singh Gyani and you're watching the channel Unfiltered Book Talk. No spoilers, just the core review, the raw, honest truth about books. If it is on my shelf, it's getting a straightforward review. Let's talk about books. Today, we reflect on the chapter 1 of The Golden Road by William Dalrymple. And the chapter is titled A Gale of Stillness. And trust me, it's a huge finding. The author, Dalrymple, starts with a surprising idea. A silence that actually roars. For Buddhists and Jains, this quiet wasn't passive. It was something sacred, an active, powerful force that could truly change. Dalrymple explains how Indian spiritual traditions, Buddhism in particular, spread through Asia. They didn't spread through fighting or conquest. वो बहुत सही बात कहते हैं कि बुद्धिज्म ऑल ओवर द एशिया इसलिए नहीं फैला था कि बुद्धिस्ट ने किसी तरह का वॉर किया था या उन्होंने कोई एरियाज कैप्चर किए थे. They simply spread because of a quiet reflection. It spread also because of personal example and, above all, meditation. William Dalrymple mentions how the Buddhists intelligently took advantage of what the nature offered to them. They used to make a productive use of the monsoon winds, a vast sea trade network from the Red Sea to the Pacific. And as per the author, this was a super highway of commerce, not conquest. Buddhist monks, scholars, and their monasteries traveled with the wealthy merchants and their trade routes. These monasteries became both religious and commercial centers, creating a symbolic relationship between faith and finance. What a powerful thought the author gives in this particular chapter of the book, The Golden Road. He further highlights that this partnership powerfully drove Buddhism along with the Indian culture, art and science into Southeast Asia and China. Let me pose a question to all of you. Do you think the absence of force was so effective in allowing these traditions to take root across such a vast area? Then Dalrymple introduces us to another important aspect in this particular chapter, and that is King Ashoka's awakening. King Ashoka is a crucial person in this particular chapter. After fighting the brutal Kalinga war, he completely abandoned violent conquest and adopted a peaceful rule. ये हम सब जानते हैं कि कैसे कलिंगा का जो युद्ध था उन्होंने उस युद्ध ने किंग अशोका को कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया. अब किंग अशोका के लिए वॉर वॉज नॉट द पाथ, बट उन्होंने क्या अडॉप्ट किया? उन्होंने ये अडॉप्ट किया कि कैसे एक पीसफुल रूल से भी बहुत कुछ किया जा सकता है. His commitment to dharma
and non-violence became a powerful example of leadership that starts with inner change. कितने ब्यूटीफुल ढंग से डालरिम्पल यहाँ पे अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करते हैं और वो लिखते हैं कि अशोका's transformation after the Kalinga war, he didn't just stop fighting, he started listening to silence, to suffering, to dharma. Then the writer brings us to another important part of the history, that is India as an exporter of ideas. वो यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री नहीं थी, एक ऐसा मुल्क नहीं था, एक ऐसा देश नहीं था जिसके ऊपर सिर्फ फॉरेन इन्फ्लुएंस आ रहा था. सो इंडिया wasn't just a receiver of foreign influence. It was a confident exporter. और एक्सपोर्टर भी किस चीज का? एक्सपोर्टर ऑफ नॉट जस्ट कमर्शियल गुड्स. और वो यहां पे हमारे जो ऑथर हैं वो एग्जाम्पल देते हैं फ्रॉम नालंदा टू एंगरवाट. इंडियन थॉट्स, जो इंडियन आइडियाज थे उस टाइम के, ट्रेवल्ड फॉर बट क्वाइटली येट पावरफुली. और यहां पे जो राइटर है वो एक significant period of ancient history जो कि roughly 250 before Christ era से लेके 1200 of post Christ era लेके आते को डिस्क्राइब करता है. और इसमें वो कहते हैं इंडिया was a massive source of power, but he makes a significant point out here. He says this power was soft power. वो soft power कहते हुए हमें क्या बताते हैं? He says that soft power was India's culture, religion से हम धर्म कहते हैं, science and trade systems. और वो ये कहते हैं कि ये कल्चर, रिलीजन, साइंस एंड ट्रेड सिस्टम्स ट्रेवल्ड एंड शेप्ड अदर सोसाइटीज विदाउट द नीड फॉर मिलिट्री फोर्स. कितना अहम पॉइंट वो यहां पे उठा रहे हैं कि इंडिया का इतना कुछ आइडियाज एक्सपोर्ट हुए पर कहीं पर भी किसी भी तरह का पावरफुल, या आप कहिए पावर, या आप कहिए फौज का इस्तेमाल नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल, ही कंपेयर्स इट विद द रोमन्स एंड इवन मॉडर्न यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स. और वो कहते हैं कि ये जो पावर्स थी, जब ये स्प्रेड हुई तो इन्होंने अपना मिलिट्री माइट यूज किया. दे यूज देयर मिलिट्री माइट. Whereas India's major export were intellectuals, intellect and spiritual. And he also introduces other places of influence, namely in countries like Indonesia, Cambodia and Thailand. और अगर आप इन कंट्रीज और इन सिटीज में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई उनके बारे में और जानना चाहते हैं, स्टे ट्यून्ड विद दिस पर्टिकुलर चैनल एंड we'll come back to you in another episode. And please do subscribe to the channel and like the video. And this is just the beginning of the golden road. The next episode we will touch upon this. Please do subscribe to this channel, like this video. Please do share your comments. Your comments will only make us do even better.